Hello, children. My name is Ritu Jain. Today, we are going to start with our first poem named Abhisara-The Tryst. First of all, I would like to make it very clear that we are going to make our explanations very easy to understand, and so thus I'm going to be bilingual for all the student, so thus they can understand it easily. So, before beginning the poem and the explanation of our poem, I would like to introduce our writer, Rabindranath Tagore, who was a versatile writer in Indian literature. He was a very good and renowned poet, short story writer, song composer, playwright, essayist, etc. and etc. So, without wasting our time, we are going to begin with the explanation. Abhisara, the Tryst. Abhisara means meeting, and the Tryst means secrets. So, Rabindranath Tagore has introduced a monk in this poem named Upagupta, who was the disciple of Buddha, lay asleep in the dust by the city wall of Mathura. Lamps were all out, doors were all shut, and the stars were all hidden by the murky sky of August. So now the Upagupta, who was the disciple of Buddha, he was the follower of Buddha. लॉर्ड बुद्धा के बताए हुए सारे जो पाथ होते हैं उन्हें फॉलो करने वाले जो उनके डिसिपल होते हैं उन्हीं में से एक थे उपगुप्ता. So after the sunset, he was tired and he just asleep in the dust by the city wall of Mathura. यानी कि he was a monk, he was not having a proper house to live in. तो जहाँ भी इन्हें जगह मिलती थी और शेल्टर मिलता था, he used to pass his night. So one night he was asleep in the dust by the city wall of Mathura. Lamps were all out, doors were all shut. At that time, there was not any electricity, and also people used to sleep after the dusk period. So it was dark all around. It shows the night times. तो रीडर्स को ये बात पता चलती है कि while he was sleeping, that time it was a night duration. So it was dark all around and dusty and gloomy because it was the month of August and he was sleeping under the sky because he was not having any shelter, he was not having any house. Whose hidden by the murky sky of August. August is known as the dusty and the dark, gloomy month. Whose feet were those tinkling with the anklets, touching his breast of sudden? All a sudden, while he was in a deep sleep, जब वो गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक से उनके कानों में कुछ आवाज आती है. That was a tinkling sound of anklets. Anklets means the ornament that women used to wear in their feet. That is called पायल. तो उसकी जो tinkling sound होता है, here it is onomatopoeia. Onomatopoeia is there in the tinkling sound of anklet. Now he heard a sound of those anklet and touching his breast of sudden. All a sudden, यहाँ पर touching his breast of sudden से मतलब है कि अचानक से you are conscious also while you are sleeping. थोड़ा सा भी साउंड होता है तो आपकी आंख आज अचानक से चौंक कर खुल जाती है. ऐसे ही वो उनकी आंख अचानक से खुल जाती है by the tinkling sounds of anklet. He woke up startled and light from women's lamp fell on his forgiving eyes. तो अचानक से जब वो चौंक कर उठकर बैठते हैं तो उनकी नज़र किस पे पड़ती है? एक लेडी है वहाँ पर खड़ी हुई है जिसके हाथ में एक लैंप है, जिसकी रोशनी उनकी उनके फेस पर पड़ रही है. किसके फेस पर? उपगुप्ता के फेस पर पड़ रही है. It was Vasavdatta, dancing girl, starred with jewels, clouded with the pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. She is a very beautiful dancing girl, a woman who is there having a lamp in her hand, जिसका जो लाइट है वो किसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है? हमारे जो प्रोटोगनिस्ट हैं इस पोम के उपगुप्ता, उनके फेस पर उस लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है. जो लेडी है, her beauty and allure are painted with such intricate details, and it is highlighting the jewelry and the youthfulness of that lady, that she was beautifully decorated with these ornaments and his attire that she was in, clouded with a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. And the
her body was covered with so beautiful clothes as the dancer used to wear at that time, like apsaras. She was dressed up like that. And here it is, like there is again a figure of a speech is there that is being used here. It is hyperbole because it is describing the beauty and youth, and that is very liveliness of the dancing girl here. She lowered her lamp and saw the young face, austerely beautiful. Now, what happened while you are having a lamp in your hand and you want to have a keen observation, that you want to see that person who is just sitting there, तो जैसे वो नाइट जो लैम्प होता है उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है उसके फेस के पास ले जाकर, तो वो देखती है Australian beautiful face. किसके face को? The young, handsome, but very serious and rescued. Why? Because saints are very far away from this world. They don't believe in beauty and they are not conscious about all these things. But yes, the lady was very attracted with Upagupta. With his young face, he was looking very attractive. Forgive me, young ascetic, said the women. Now, because you are going to disturb someone who is in a very deep sleep, so with the forgiveness she's asking for, and because she has disturbed that man who was sleeping with the tinkling sound of her anklet, so she felt like sorry and graciously come to my house. And she offered him that, why are you sleeping here in this open area under the sky? You also need some comfort. So she's offering him to come with her to her home and have a very good sleep in cozy bed and relaxation. So graciously come to my house. The dusty earth is not fit bed for you. And she is offering her by saying this, that why are you sleeping here? It is not a comfortable place, so you cannot sleep in a very good way. So it is very dusty, it's very hard, very uncomfortable. So the young ascetic answered, women, go on your way. When the time is ripe, I will come to you. Because he is a monk, he doesn't believe in all these comforts because he has left it already. He has left his house even. So, with grace, he says that, oh women, thanks for your offer, but you just go to your way. आप अपने रास्ते पर चले जाइए. हाँ, एक समय जब आएगा. While the time is right means while the time is perfect. While the time is perfect, definitely I'll come. Suddenly, the black night showed its teeth in a flash of lighting. Now, what happened? There is a personification. Why? Shadow cannot have teeth. So, the shadow is being shown here like a person. So, here it is personification here in this line. Suddenly, the black night showed its teeth in a flash of lightning. इतने में क्या होता है, जो बाहर का मौसम होता है वो अचानक से बिगड़ता है, and the peace interrupted by the storm. And there is a symbolism, there is a symbolism, and there is again an auditory imagination, ठीक है ना? And there is an emotion between both of them. जैसे ही लाइटनिंग होती है बाहर, तो अचानक से दोनों के फेस का जो आप कहते हो ना कि गेस्चर्स चेंज होते हैं, तो वो फेस पर दोनों के नजर आता है. तो देयर वर सम इमोशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. द गर्ल वाज शोइंग her, you can say, a kindness or attraction or whatsoever was there in between these two people. It could be seen on their faces. The storm growled from the corner of the sky and the women trembled in the fear. So why it is written here? Because ये जो आपका sound आ रहा है ना, growled sound, इट इज़ एन ऑडिटरी इमेजिनेशन. दो होती हैं ना हमारे पास में, एक होती है विजुअल और एक होती है ऑडिटरी. तो यहाँ पर ऑडिटरी है, थंडरिंग का साउंड आ रहा है या लाइटिंग का साउंड आ रहा है, तो उसको सुनकर यू कैन इमेजिन दैट साउंड. सो हियर इट इज़ दैट personification, and personification is in first line, and here growl, there is an auditory imagination of the sky and the women trembled in fear. और अचानक से वो जो तेज बिजली की
गड़गड़ाहट होती है, आवाज़ होती है, उससे लेडी जो होती है वो थोड़ी-सी डर जाती है, सहम जाती है। नाउ अ ईयर हैड नॉट येट पास्ड। यहाँ पर राइटर ने इस जो हम अभी तक हमारा का जो सीन चल रहा था, उसको वहाँ पर ही इनकम्प्लीट छोड़ा, उस रात तक ही। एंड उसके बाद में उन्होंने एक सेकंड फेज ऑफ द पोम हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया विद द लाइन अ ईयर हैज नॉट येट पास्ड। यहाँ से क्या हुआ, 1 ईयर के गैप को आपने डायरेक्ट यहाँ पर दिखा दिया। सो देयर इज अ सेकंड फेज while we are going through that paragraph, that stanza. Here will be the second phase. Now what happened? It was evening of the day in the April, in the spring. The branches of the wayside trees were full of blossom. In the beginning, don't forget that we have read about a month that was August, that was a very dark, dusty, and gloomy month. As it happens, because रविन्द्रनाथ टैगोर, आप बोलो कि उनकी एक खासियत होती थी कि वो अपनी नेटिव प्लेस को और अपनी कंट्री को वो हमेशा आप देखोगे हाईलाइट करते थे। तो यहाँ पर जो उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क की बात की है, चाहते तो वो आप नेपाल, चाइना या कहीं का भी ले सकते थे, बट दैट स्टोरी इज़ बेस्ड इन इंडिया विद आवर कल्चर। सो यहाँ पर जब हमारा स्प्रिंग सीजन होता है, तो यहाँ पर वो स्प्रिंग सीजन की बात कर रहे हैं, दैट इज अप्रैल। और द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम। तो यहाँ पर जब स्प्रिंग सीजन होता है तो क्या होता है, ऑटम सीजन के बाद जब स्प्रिंग सीजन आता है तो सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, ब्लॉसम्स आ जाते हैं, कलियां खिल जाती हैं, फूल खिल जाते हैं। तो यहाँ से वापस से, अब अभी तक आपने ऑडिटरी इमेजरी को पढ़ा था, यहाँ पर आप इमेजिन करोगे इन लाइन को पढ़ते ही कि आपको अपने आगे एक स्प्रिंग सीजन हरा भरा सब कुछ नजर आएगा। सो हियर इट इज विजुअल इमेजरी। Now, gay notes of flute came floating in the warm spring air from afar. Now he is explaining about that month while each and everyone is so happy. And gay means happy. Notes of the flute came floating in the warm. So the sound of the flute means a pleasant sound that you love to hear. यहाँ पर उस साउंड को उन्होंने यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हम रीडर्स को, स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार। और एवरी वन इज लुकिंग वेरी हैप्पी बिकॉज इट इज अ स्प्रिंग सीजन। तो दूर दूर तक सभी कैसे नजर आ रहे हैं, एयर जो है एटमॉस्फेयर है दैट इज फुल विद द म्यूजिक एंड द पीपल आर लुकिंग वेरी हैप्पी। द सिटीजन्स हैड गॉन टू द वुड्स, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। जैसे आपने देखा होगा केरला में हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसे ही स्प्रिंग सीजन में इट इज़ अ वेरी वंडरफुल सीजन फॉर द फार्मर्स बिकॉज दे कैन एंजॉय, बिकॉज द क्रॉप्स आर रेडी, everywhere they can see the greenery, and it is such a pleasant month for them. तो सारे के सारे जो citizen हैं, because at that time we are not having those kind of cities where we are living in these times like this time. तो जो सिटीजन है वो सब सेलिब्रेशन के लिए कहाँ गए हैं, वुड्स, वुड्स फॉर द फॉरेस्ट, जंगलों में गए हुए हैं फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। From the mid sky gazed the full moon on the shadow of the silent town. The young ascetic was walking in the lonely street. And now it is a time of midnight. So mid sky gazed the full moon on the shadow of the silent town. सब लोग अपने अपने में सेलिब्रेशन में बिजी हैं, enjoy कर रहे हैं, they're feeling themselves very enthusiastic with the monk who is all alone because he's not having any family, he's not having any family people around him. So he is all alone. And now what he is doing? It is a time of the night. There is illumination, and the passage of the time is being shown here. The young ascetic was walking in the lonely street. अब सब सड़कों पर, सड़क खाली पड़ी है क्योंकि सभी लोग गए हुए हैं सेलिब्रेशन के लिए फॉरेस्ट में। जो हमारा एस्थेटिक है यानी कि हमारा उपगुप्ता जो हैं, वो अकेले वहां पर एक गली है, एक सड़क है, उस पर टहलते हुए आगे जा रहे थे। वाइल ओवरहेड द लव सिक कोल uttered from the mango branches their sleepless plaint. Upagupta passed through the city gates and stood at the base of the rampart. Now, while he is walking on the street, तो ओवरहेड उनके सिर के ऊपर जो पेड़ों की जो ब्रांचेस झुकी हुई हैं, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ मैंगो ट्री, और उसके ऊपर एक लव सिक कोयल बैठी हुई है और अटर कर रही है। इट इज ऑल्सो ट्विटरिंग, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अ साउंड, but that sound is just like a plaint. Plaint means complain. it it seems like that it is complaining. Why it is complaining? Because
It is a kind of cry and, lamination desire as they are waiting for their partners. So Upagupta passed through the city gate and stood at the base of the rampart. तो अब जब वहां से गुजरते हुए उपगुप्ता आगे बढ़ते हैं, सिटी गेट्स तक पहुंचते हैं, सो व्हाट हैपेंस, अ डिफेंचर वॉल ऑफ अ कैसल और द वॉल ऑफ द सिटी, जहाँ पर एंड होती है, तो आप जानते हो ना, एक बाउंड्री जैसी वॉल बनी होती है, जब वो वहां पर जाते हैं, उस एरिया को पास कर लेते हैं, वहां पहुंचते हैं अपने सिटी के आउटर वॉल एरिया में, तो व्हाट ही सॉ, ही हैज सीन दैट what women yes, so what women lay at his feet in the shadow of the mango grove. अचानक से देखते हैं कि ये क्या, आखिर ये जो लेडी लेटी हुई है या मैंगो ग्रोव के पास नीचे, स्ट्रक विद द ब्लैक पेस्टिलेंस, हर बॉडी स्पॉटेड विद सॉर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो अचानक से उनकी नज़र पड़ती है कि एक लेडी वहाँ आम के पेड़ के पास लेटी हुई है नीचे ज़मीन पर, और उसकी जो बॉडी है वो, it is a black pestilence for mean a fatal epidemic. She is cursed with that disease, जो उसकी पूरी बॉडी पर स्पॉट पड़ चुके हैं, और क्या हो गए हैं, सॉर्स हो गए, सॉर्स जिसे आप कहते हो ना, फोड़े निकल आए हैं, वो उसकी बॉडी पर स्मॉल पॉक्स की तरह निकले हुए थे। एंड देन she has been hurriedly driven away from the town, or it was a contagious disease, she thought, and she took her away from the city people because she knew that they are not going to accept her. So that she is coming at the outside of the city area and she is lying there all alone. No one is there to take care of her. She has been hurriedly driven away from the town, and it shows an immense love and humanity of that man who is standing there beside that lady. What happens to avoid her poisonous contagion? He is not bothering that she is having a contagious disease and he could also have that. So, this kind of feeling shows the immense love and humanity of that person towards that lady. The ascetic sat by her side, took her head on his knees. Ascetic, without having any hesitation about her disease, her infection, and all, what he is doing, he is showing his compassion, his kindness to the lady. वो उठाता है उसके सिर को और अपने पैरों पर रख लेता है, and moistened her lip with the water and smote her body with the balm. और उसके जो सूखे होठ थे, because no one is there to take care of that lady, and lady was not physically that much fit that she could go and can arrange water or something to eat. So सबसे पहले, अब जो मॉन्क्स होते हैं ना, दे आर हैविंग दे बैग्स एंड दे हैव समथिंग टू ईट एंड दे हैव सम वाटर इन दैट बैग, तो वो उसमें से पानी निकाल कर उसको, यहाँ पर क्या है, मॉइस्टेंड हर लिप, मीन्स ही इज प्रोवाइडिंग सम वाटर टू लेडी। वो उसको थोड़ा सा सिप करती है एंड स्मर्स्ड अप्लाई करता है, क्या, अपने बैग में से निकाल कर, एक बाम होता है उनके पास में, दे यूजुअली हैव दैट, इट इज़ मेड अप ऑफ सम हर्ब्स एंड ऑल, वो निकालता है और उसकी बॉडी पर जो उसे डिजीज़ है, जो उसे इन्फेक्शन है, जो स्मॉल पॉक्स हैं, उन पर अप्लाई करता है। जब वो इतनी केयर देखती है, कंसर्न देखती है, लव कंपैशन देखती है ऑफ अ स्ट्रेंज पर्सन, वेयर नो वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट हर इन दिस सिटी, it is quite strange for her to accept that there is a person who is here and taking care of her in this pathetic condition. So she asked, हु आर यू मर्सीफुल वन, आप इतने जो दयालु हैं, जो मेरा इतना सर्व कर रहे हैं मुझे, आप हैं कौन? आस्क द वुमेन, बिकॉज शी वॉज वेरी वीक, हर आईज वर वेरी वीक, शी वॉज नॉट हैविंग that much power in a body that she could get up and can recognize that person. So वो उनसे पूछती है because she couldn't recognize him. So at that time, at last, he came to visit you and I am here. वो कहता है कि उसको याद है ना कि उसने एक बार बोला था बिगिनिंग में कि अभी समय नहीं है, जब सही समय आएगा तब मैं आऊँगा तुम्हारे पास। नाउ ही इज सेइंग द टाइम एट लास्ट, आखिरकार वो समय आ ही गया जब मैं तुमसे मिलने आया हूँ। एंड आई एम हियर, देखो मैं आ गया, मैं वासव दत्ता, इट्स मी, रिप्लाइड द यंग एस्थेटिक। जो उसके वर्ड थे, ही वॉज अ compassionate and he kept his promise, because once
He promised her that while the time will be ripe, while the time will be suitable for our meet, I'll definitely come to meet you. And it is a time while she need his help, and he is there at that time. He has fulfilled his promise. He kept his words. That's it. I hope that it is the easy way to explain the poem, and you all learned it so well. So thank you, and I'll meet you with another explanation of